Welcome to this Wednesday's edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र की ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आइए शुरू करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से, जिसे लेकर मौजूद हैं Arjun Chaudhary. Domestic stock indices climb around 0.9%. Sensex regains the 61,000 mark. Nifty settles near 18,200 points. Global stocks climb after U.S. Fed Chair Jerome Powell sounded less hawkish than expected in his testimony before the Congress. And Brent crude oil prices rise to trade above $84 per barrel level. घरेलू शेयर बाजार में लिवाली तेज, प्रमुख सूचकांक लगभग 0.9% बढ़े। सेंसेक्स एक बार फिर 61,000 के स्तर से ऊपर पहुंचा। निफ्टी 18,200 के नजदीक बंद हुआ। अमेरिका में कांग्रेस के समक्ष केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के प्रमुख जेरोम पावेल के बयान पर दुनिया भर के शेयर बाजारों में उछाल और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत बढ़कर $84 प्रति बैरल से ऊपर पहुंची। In our top story, retail inflation rose to 5.59% in December last year from 4.9% in November. Inflation based on the Consumer Price Index, CPI, rose mainly due to rising prices of manufactured items. As per the government data released today, food inflation has increased to 4.05% in December from 1.87% in November. Inflation as measured by the Consumer Price Index was 4.59% in the year-ago period. On the other hand, industrial production IIP for the month of November grew by 1.4% as compared to 1.6% in the same month last year. According to the data released by the Ministry of Statistics and Program Implementation, IIP surged 3.2% in the month of October. Mining sector grew by 5% in the month of November as compared to a contraction of 5.4% in the same month last year. हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के वरिष्ठ विश्लेषक जयंतो दास। जयंतो, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शुक्रिया, नमस्कार। जयंतो, ये जो आंकड़े हैं मुद्रास्फीति के, वह क्या दर्शा रहे हैं? नवंबर में जो बीता हुआ वर्ष है उसमें 4.91% से 5.59%, यानी लगभग कह लें कि 0.6% की वृद्धि हम देख रहे हैं। क्या कह रहे हैं ये आंकड़े? देखिए, मुद्रास्फीति के ऊपर जो दबाव जो है अलग से, ये तो खैर जाहिर है क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज का भी दर वगैरह कुछ वृद्धि हुआ है और कोविड के चलते खास करके इकोनॉमी में जो भी चैलेंजेस आया हुआ था उस वजह से भी एक कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। तेल का कीमतों में काफी वृद्धि हुआ, हम सबको पता है। तो ये सारी चीजें बेशक इकोनॉमी के ऊपर एक चैलेंज बताते हैं। मैं मानता हूं कि आरबीआई के आने वाला मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर एक डायरेक्टिव बताएंगे कि ब्याज दरों के ऊपर वृद्धि करके इस तरह का इन्फ्लेशन में काबू करना उचित होगा कि नहीं। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त बहुत जरूरी है कि मुद्रास्फीति के ऊपर किसी न किसी तरह से काबू पाना, रादर देन हैविंग अ रनअवे इन्फ्लेशन एट दिस स्टेज, क्योंकि हमारा जो ओवरऑल जीडीपी का जो उम्मीद है 9% है। हालांकि वर्ल्ड बैंक ने 8.2% एक्सपेक्ट करता है करेंगे इस बार इंडिया इन टर्म्स ऑफ रियल टर्म्स, तो वो फिर जीडीपी ग्रोथ का जो टारगेट है वो हासिल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। Jayant, you spoke about inflation just now rising to 5.59% in December. We are also in the period where the corporate results are being announced for the third quarter, and manufactured items are being listed as a main cause for the rise in inflation. Raw materials, intermediate goods, those companies which provide it have seen a record rise in its valuation. What does this mean for the consumer in the next quarter, especially with the lockdown partially installed right now? Well, first thing is, Arjun, at this point of time, I don't think the whole country has got in for a lockdown. It's only the major cities which are experiencing or at least witnessing some sort of a restricted lockdown, if not a clampdown like previous occasions, number one. Number two, what also has to be understood is from here on, the next 4 to 6 weeks would decide where, the further restrictions would be imposed by the government or would be having a downward curve in the Omicron cases.
But one thing is for sure, and this could be the other reason, not only in India but globally, that despite Omicron flaring up at such a super speed world over, no major country has gone in for a complete lockdown like previous years. So industry, manufacturing and all had been allowed to breathe. I won't say had been allowed to work because it's not a perfect environment to work, but at least has been allowed to breathe. And industries, manufacturing companies, despite their challenges, are somehow trying to keep on the as they say, the game on in terms of their activity. Now, obviously, it's not the best case situation to be around. It's not something to feel happy about, specifically for our small industries who are continuously facing, every 2 or 3 months, such haggles. And not only in terms of lockdown or restrictions, but also in terms of their own manufacturing, because these are all small units, as we know. And India's manufacturing sector has such 70% of this manufacturing sector consists of small units. So they too are facing challenges in terms of manpower, because we have a shifting manpower. There's a manpower which is not stable, which doesn't stay there. And every time such, waves come in, the labor tends to go back from where they come in. It's a migratory manpower, we all know. So they all have their own sets of challenges, which has brought into, a very, very, genuine, but at the same time pronounced increase in prices, both input prices, which finally led to this rise in output prices. So there's no denying the fact that it's not something which can be just wished away through a policy measure. But yes, policy measures have got enough in its arms to at least try to control it. And that's what I look forward to. Well, you spoke about the combination of inflation and IIP on the economy. How would you compare it to the World Bank report, where they have drawn down the growth for the global economy from 5.5% for 2021 to 4.1% in 2022 and further draw down to 3.2% in 2023? Well, I wouldn't say it's a huge surprise, nor would I say it's exactly the drop one would have expected at the same time. But then, as I said, these are early estimates in terms of how it is panning up. And as you have seen, there are various reports when the first Omicron variant was announced from South Africa. There was a panic in the stock markets, when it started spreading in UK and France. But then, the US stock markets, specifically the Dow Jones and all, they were at really highs when, US was adding around 1 million new cases a couple of weeks ago in terms of new cases per day. So if you just discussing stocks, I would repeat something which I have said a number of times earlier, and it's a fact which you have seen and it's a fact which we are seeing again. The stock markets have been very strangely, while they have been reacting initially to how COVID has been fanning in or COVID has been coming up wave after wave. But somehow when the COVID cases are in their peak in terms of cases and all globally, the stock markets have a own mind of their own. I mean, for example, when India was under the severest form of second wave where so many were dying per day, right? Specifically in the months of April and May till first 2 weeks of May, we have seen the stock market surging to new levels almost every day. And why last year, if you see the trend of how the stock market is behaving in New Year ever since 1st Jan, you see, I mean, there is absolutely a strong disconnect of how Omicron is behaving in India and how stock markets are behaving. So somehow I feel there is quite an insensitive link, between COVID cases. But having said that, I mean, we should not denounce, because obviously industries are getting hurt, companies are getting hurt, and more of all, it's people who are getting hurt, who make up the industry and company and stock markets, right? Well, Jayanto, we're heading for a short commercial break. We'll come back with more on Market Mantra with you. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पानी यूं मत डाले जाओ, ऋतु देख के फसल उगाओ। सिंपल है छोटे, कि अपने लक्ष्य को दिमाग में रख कर इन्वेस्ट करना सीखो, पैसा ऐसे ही मत लगाते जाओ। ओ, तो ये बात है। हाँ छोटे, अगर पढ़ाई के लिए या किसी की शादी के लिए जोड़ना है रुपया, तो उसी हिसाब से तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना भैया। बड़े भैया, छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है मार्केट मंत्र में। आइए अब चलें शेयर बाजार की ओर। पहले घरेलू शेयर बाजार। वैश्विक बाजारों से मिली तेजी के संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में आज लिवाली तेज रही। सेंसेक्स और निफ्टी
दोनों 0.9% के आसपास बढ़त में रहे। सेंसेक्स एक बार फिर से 61,000 के ऊपर पहुंच गया। निफ्टी भी 18,200 के नजदीक आकर बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 0.88% की वृद्धि से 533 अंक बढ़त के साथ 61,150 दर्ज हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.87% बढ़कर 157 अंक बढ़त के साथ 18,212 पर जा पहुंचा। विस्तृत बाजारों की ओर चलें तो वहां छोटी और मझोली कंपनियों का प्रदर्शन भी काफी अच्छा रहा। खासतौर से मिड कैप इंडेक्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। इसका प्रदर्शन सेंसेक्स निफ्टी दोनों से बेहतर रहा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 1.08% लाभ में रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.7% की वृद्धि हुई। Sensex and Nifty today rose around 0.9%. Both stock indices gained amid positive cues from the global equity markets. Sensex closed above the 61,000 level while Nifty regained the 18,200 mark. BSE Sensex climbed 533 points, or 0.88% to finish at 61,150. NSE Nifty also surged by 157 points, or 0.87% to settle at 18,212. In the broader market at the BSE, the mid-cap index also gained by 1.08% and the small-cap index surged 0.7%. In the Sensex pack, shares of 24 companies climbed while 6 fell. Mahindra & Mahindra was the top gainer as it surged 4.7%, followed by Bharti Airtel, which gained 3.8%. Reliance jumped 2.7% and IndusInd Bank rose 2.6%. On the other hand, Wipro plunged 2.5%. TCS and Titan both declined 1.5%, while HDFC Bank and Tech Mahindra both fell around 0.6%. In sectoral indices, 17 out of the 19 sectors climbed. Telecom sector was the top gainer as it rose 3.2%, followed by power and realty sectors, which climbed 2.2%. Energy sector index gained 2.1%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 1,810 companies gained while 1,644 companies fell. Shares of 76 companies remained unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 1 पैसा कमजोर हुआ, 73 रुपए 92 पैसे पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 0.01% घटकर 95.62 पर चल रहा था। जैन अभी विराम से पहले आप जानकारी दे रहे थे कि दुनिया भर में हमने चलन देखा है कि कोरोना का एक और संक्रमण बढ़ रहा था, उसके बावजूद शेयर बाजार में तेजी हमें देखने को मिली और नए नए स्तर को पहुंचता चला गया। प्रमुख सूचकांक भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कई स्थानों पर ये प्रवृत्ति देखने को मिली। एक बार फिर से जब कह लें कोविड के जो नया ओमिक्रॉन स्वरूप है उसके संक्रमण को विस्तार मिल रहा है कई देशों में, वहीं भारतीय शेयर बाजार में जनवरी में विशेष रूप से हम देख रहे हैं कि तेजी फिर से वापस लौटी है और जो एफआईआईज हैं उनकी ओर से लिवाली की जा रही। क्या मुख्य कारक हैं? देखिए, इसमें मैं मानता हूँ 3 मुख्य कारक है। अगर आप खास करके 1 जनवरी से अगर बात करें तो एक तो प्रधान रूप से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स वापस आए हुए, जो पिछले मतलब अगर आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर का महीने देखें वो खास करके नेट सेलर्स थे, तो वो सारे वापस आ गए और उनका खरीदारी देशी बाजार में चल रहे हैं, तो वो एक वजह है। दूसरा वजह ये है कि मैं मानता हूँ जनवरी मंथ पे खास करके बड़े कंपनियों का नतीजा आने वाली इन्फोसिस का नतीजा बेटर देन मार्केट एक्सपेक्टेशंस रहा। अभी थोड़ी देर पहले खबर सुना मैंने। और इसके अलावा ये एक महीने है जो प्री बजट रैली होता है, हम सबको पता है, जहाँ पे टिपिकली अगर आप ऑफिशियली देखें तो करीबन 2 हफ्ता का रैली टिपिकली अगर आप देखें माना जाता है, जहाँ पे उम्मीद किया जा रहा है कि मार्केट में जिस तरह का खबरें होने वाले हैं और खास करके कोविड होते हुए, तो उसका भी एक अलग से असर बाजार में होता है। अब वो प्री बजट रैली कोई साल अगर आप देखेंगे बहुत अच्छा रहता है, कोई साल धीमे साल से होता है, उसमें कुछ खास आंकड़े का रूप से कुछ उत्साहित होने का कुछ होता नहीं चीजें, लेकिन होते बेशक जरूर। और तीसरा जो है मैं मानता हूँ वो ये है कि मार्केट में, और ये ग्लोबली इसका एक असर है, सिर्फ भारत में नहीं, कि ओमिक्रॉन का शुरुआत जितना खतरनाक था उसके बाद ओमिक्रॉन का खतरा, जैसे सेकेंड वेव में इंडिया में जैसे डेल्टा का टाइम में देखा गया था,
जहाँ पे फेटेलिटीज काफी ज्यादा थे, तो उस तरह का फेटेलिटीज या हॉस्पिटलाइजेशन का खबर दुनिया भर से कहीं नहीं आ रहा है ओमिक्रॉन को लेके। हाँ, ये जरूर है कि कल मैं KPW को सुन रहा था, करीबन 4 से 5 गुना ज्यादा इन्फेक्शस है ओमिक्रॉन, लेकिन पीरियड ऑफ रिकवरी भी काफी छोटा अवधि है। करीबन 4 से 5 दिन में आपका रिकवरी हो रहा है, और डॉक्टर्स का भी ये सलाह है एज पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स कि 7 दिन के अंदर अगर आप होम क्वारंटाइन में है, 7 दिन के अंदर आप बाहर आ सकते हैं इसके साथ। इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ, मेरा भी कोविड होकर रखा है, तो मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, और आई कैन टेल कि माई 3rd डे ऑफ कोविड टुडे एंड आई एम ऑलरेडी फीलिंग बेटर। ना मेरा बुखार है ना कुछ है। तो देखा जाए तो ये एक अलग वजह है जिस वजह से मैं मानता हूँ कि दुनिया भर में, सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर में भी मार्केट का एक अलग से तेजी रूप आया हुआ है। और ओवरऑल एक जो चीज है जहाँ पे ये किया जाता बात कि भाई यूएस फेड ने एक हॉकिश पॉलिसी शुरू करने वाले हैं, जहाँ पे वो अपना बैलेंस शीट को श्रिंक करेंगे, और वो भी किया जा रहा था कि मार्केट, अगर आप लास्ट 2 हफ्ते देखें दिसंबर का, मार्केट्स में अलग से एक स्केयर आया हुआ था, टेक मार्केट में भी एक बहुत बड़ा गिरावट आया हुआ था, लेकिन फेड ने अपना स्टेटमेंट में अलग से बताया कि हाँ, ये जरूर है कि इस साल वो अपना श्रिंकिंग इन करेंगे, ब्याज दर को पर शायद इस स्तर भी कहीं ना कहीं से लेंगे, लेकिन जितना जल्दी वो उम्मीद कर रहे थे शायद उतना जल्दी वो ना आए। तो ये मैं मानता हूँ मार्केट के एक अलग से राहत का वजह है, जहाँ पे आप भारतीय बाजार के बारे में बात करें, अगर आप यूएस मार्केट के बारे में भी देखें, वहाँ पे भी डाउ जोन्स का, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले अर्जुन से बात करते वक्त कह रहा था कि डाउ जोन्स का भी बहुत अच्छा दौर रहा जनवरी में पहला हफ्ता, जहाँ पे 8 मिलियन न्यू केसेस वर गेटिंग एडेड इन ओमिक्रॉन इन यूएस। जी, हम सबसे पहले तो कामना करना चाहेंगे कि आप शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करें, और श्रोताओं, ये दर्शाता है कि ओमिक्रॉन बेशक लोगों को हो रहा है, लेकिन कामकाज पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा। जैसे जैन तो हमारे साथ ऑनलाइन ही सही लेकिन कार्यरत हैं, और जी, well, clearly the work from home is working here, Jayanto. But our listeners would like to know that with the corporate results of Bellwether stocks like TCS, Infosys, and Wipro being declared post market hours at 3:30 in the afternoon between 4 and 7 p.m. What would be the likely performance of these Bellwether stocks when the market opens again tomorrow? Well, I guess Infosys results have been read out in the news, I guess, somewhere. I mean, Infosys results have been... It fell by 2.5%. Wipro, Infosys, we cannot say right now. But I guess Infosys results have been a bit better than what the market was expecting. So that's a good news, although I am not confirmed yet. Someone has just sent me a WhatsApp forward. So I have actually got to see their press release in that sense. But overall, I believe, as I said, these companies, specifically the Bellwether stocks, would hold in a good, dimension to the markets this quarter. And as I said, amongst the three which will be going to pull up the stock markets, these would be one of the important factors of how the Bellwether stocks would be performing in this quarter. So I am quite positive that they will be holding on to the market expectation, as the Infosys results are to be, which has been sent to me through a WhatsApp forward. I think if they are to be believed, obviously they have done much more better. So there would be a pull up in terms of how the market buoyancy plays compared to directly to the results, if you say so. And the banks and all, as I say, it's already they are doing, I guess, pretty well. The results also should come in very soon. We'll get to know of them. But then I guess, Arjun, the main driver for the next 2 weeks now would be obviously the pre-budget driver. And there are already news of, taxes being tinkered and all those stuff, which typically is a hot topic for discussion always before budget. And stocks also react or tend to react based on that. But then I think we are settling on to, at these levels, the comeback rally, as you would be knowing, has been quite fast and happily good. Well, Jayanto, we will continue this discussion in more detail, but before that, we'll take a very short break. So please stay tuned on Market Mantra. बड़े भैया, इस दोहे को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो फसाए। सिंपल है छोटे, कि बिना विचार किए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बाद में पछताएंगे और लोग हारेंगे। वो तो ये बात है। हाँ छोटे, लोगों की बातों में मत पड़िए, इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर आज से ही करिए। बड़े भैया, अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
Welcome back to Market Mantra, and we were in discussion with our business analyst Jayanto Das on the market performance today. Jayanto, good to have you back on the program once again, despite suffering from COVID. Jayanto, today the DIIs were once again the net buyers in the market. FIIs were the net sellers. They were the net buyers earlier. What is their likely activity for the month of January? Will there be intermittent buying and selling on their part? And what is the impact likely to be on the rupee, because it's recovered strongly against the US dollar and it's still trading under 74? Yeah, so the rupee has been, I think, 73 plus levels, and I believe that the inflow will be maintained. The foreign investment inflow into the stock markets will be maintained at least in this quarter, because by March we would get to know how again Fed is reacting, and then they would like to realign the investments. So I think it's happy investing for them in this particular quarter. What will also depend is I seriously look forward to the government having in some good policy announcements that will attract some more foreign investment, because that's what we severely need at this point of time to have that big jump that had put a brake somewhat in our run up, and specifically, as I said, these would flow in, and obviously the next 8 to 10 weeks we should have a good flow. जंतु आज टेलीकॉम सेक्टर में अच्छी खासी लिवाली की गई और ठीक ठाक बढ़त के साथ बंद हुआ इसका जो सूचकांक है, वो क्या कारक रहे, क्या कारण रहा? देखिए, टेलीकॉम सेक्टर में खास करके अगर आप देखा जाए, मैं ओवरऑल पिक्चर बता रहा हूँ, आज का सिर्फ नहीं बता रहा हूँ। एक तो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, उसमें एक वृद्धि हुआ है। टेलीकॉम सेक्टर में कंसोलिडेशन का जो बात चल रहा था, उसमें थोड़ा बहुत राहत मिला है, जहां पे बेसिकली 3 या 4 मेजर प्लेयर्स इस वक्त देश में है, और एक जो अनिश्चितता से भरा पड़ा था इंडस्ट्री में, जहां पे किस तरह का सरकार सपोर्ट करेंगे, जो चार्जेस है वो चार्जेस लेंगे कि नहीं लेंगे। अब जैसे वोडाफोन का आप देखें, जो चार्जेस उनका है वो इक्विटी में कन्वर्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं निजी क्षेत्र और सरकार खास करके टेलीकॉम को ओवरऑल हेल्दी रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश कितना सफल होएगा समय बता पाएंगे आंकड़े के रूप से, लेकिन मैं मानता हूं कि इट्स अ गुड एग्जाम्पल for the government to come forward and try to work it out. और जिस वजह से अगर आप 6-8 महीने या 10 महीने पहले आप देखें, जहां पे एयरटेल का प्रमुख भी बताए हुए थे कि टेलीकॉम क्षेत्र में जो स्थिति है, खास करके 1 या 2 प्लेयर्स ही बचेंगे, तो वो स्थिति से आप चीजें काफी अच्छा है, क्योंकि काफी सारी चीजें सरकार ने पॉलिसी के रूप से सपोर्ट दिया है टेलीकॉम क्षेत्र को। और साथ में जैसे मैंने कहा, बिजनेस के दौर से नीतिगत रूप से सपोर्ट तो बहुत जरूरी है, लेकिन बिजनेस कितना अच्छा कर रहा है वो आरपू का वृद्धि का रूप से अगर आप देखें तो उसमें भी वृद्धि हुए है, और उस वजह से शायद मैं मानता हूं कि टेलीकॉम सेक्टर का भविष्य जो है इस वक्त थोड़ा सा उज्जवल दिख रहा है। आइए आगे बढ़ें, चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां आज लिवाली तेज रही। निवेशकों ने अमेरिका में कांग्रेस के समक्ष केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के प्रमुख जेरोम पावेल के रुख का स्वागत किया। हांगकांग के हेंगसेंग सूचकांक में 2.8% की तेजी आई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.5% लाभ में रहा। जापान के निक्केई 225 सूचकांक में 1.9% की वृद्धि हुई। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.8% लाभ के साथ बंद हुआ। उधर सिंगापुर के स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.3% की बढ़ोतरी हुई। यूरोपीय जोन पर ध्यान दें तो अंतर्दिवसीय कारोबार में बढ़त का रुख था। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.7%, जर्मनी का डेक्स 0.5% और फ्रांस का CAC 40 0.3% बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। Moving on to the US stock market, US stock indices gained ground yesterday as investors were relieved that Fed Reserve Chair Jerome Powell's testimony before the Congress did not include any major surprises. Fed Reserve Chair Jerome Powell in a congressional hearing said the economy should weather the current COVID-19 surge with only short-lived impacts and was ready for the start of tighter monetary policy. The Dow Jones Industrial Average ended 0.5% up, the S&P 500 gained 0.9%, and the Nasdaq Composite Index climbed 1.4%. Very briefly, Jayanto, do tell us what is the likely discount rate that is going to be announced by the Fed in order to tighten the monetary policy? Could you just ask the question once again? I lost your voice. Hello? What is the likely discount rate to tighten monetary policy? Very briefly, we're running out of time. No, I think 50 basis points would create a huge uproar anyway. So let's see what they finally arrive at. But I think they are just stalling it right now to create any further upheaval in the market.
Let's have a look at the oil market now. Brent crude oil prices today gained to trade above $84 per barrel. The crude prices rose amid supply disruptions and fading worries regarding the rapid global rise in Omicron infections. In intraday trade, Brent crude was trading marginally above $84 per barrel, while WTI crude prices were at $81.70 per barrel. Ajayant, once again, very briefly, the futures prices are lower than the spot prices. We're seeing some backwardation. How concerned should governments be with the rise in crude oil prices right now? Well, at this point of time, I guess it's something we have to wait and watch, because as I said, the industry manufacturing figure, while the stock markets are doing well, we finally have to see how in the next quarter the manufacturing units do well, because nothing has shut down per se anywhere in the world in terms of manufacturing because of COVID. So at least the manufacturing thing. So it's something which, as the oil prices are completely linked with demand, obviously, and that's how the prices keep on rising and falling. That's what governments would like to do. यानी आने वाले दिनों में तेल के दाम हम कहां तक जाता देख सकते हैं, संक्षिप्त में ही समझना चाहेंगे। देखिए, आई डोंट वांट टू मेक अ वाइल्ड गेस, बिकॉज तेल का जो कार्टेल्स है, दे नेवर एग्री टू व्हाट दे स्पीक एंड दे नेवर एग्री टू वर्क और नॉट वर्क टुगेदर ईदर वे। तो इस वक्त उसके ऊपर आंकड़े डालना मैं ठीक नहीं मानता इस वक्त, लेकिन जैसे मैंने कहा, वेट एंड वॉच एक पॉलिसी हो जहां पे किस तरफ ओवरऑल ग्लोबली ग्रोथ की तरफ जो निर्णय हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले अर्जुन ने वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के बारे में कहा, जहां पे 1% के करीब और 1% से भी ज्यादा ग्लोबल श्रिंक डाउन कहा जा रहा है। तो उसका हिसाब से तो तेल का प्राइसेस भी कम होना चाहिए। अब ये देखना पड़ेगा आखिर में क्या हो रहा है देश भर में, और उस वक्त कैसे कैसे थिंक ले रहा है। लेकिन तेल प्राइसेस एक डायरेक्शन देना इस वक्त मैं मानता हूँ ठीक नहीं रहेगा। बस यहीं पर हम चलते हैं सर्राफा बाजार की ओर। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी अनुबंध वाला सोना आज 50 रुपए बढ़कर 47,740 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। उधर मार्च अनुबंध वाली चांदी 100 रुपए घटकर 61,200 रुपए प्रति किलो पर आ गई। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोने का मूल्य $1,817 रहा। चांदी $22.80 प्रति औंस के आसपास काम कर रही थी। यहीं पर श्रोताओं की ओर से हम आपको पूछना चाहेंगे कि सोने में निवेश के लिए यह अवसर कैसा रहेगा, खासतौर से जो स्वर्ण बॉन्ड की भी घोषणा हुई थी उसे ध्यान में रखते हुए। मैं मानता हूँ सोना विल रिमेन अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। हालांकि काफी वीकनेसेस पिछले 1 साल दौरान सोने में रहा, लेकिन अगर कोई 3 साल या 5 साल का अवधि लेकर सोने में इन्वेस्ट करते हैं, इट विल बी अ गुड रिटर्न ऑप्शन। बस अब आप श्रोताओं की ओर से जैन तो हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे, साथ ही आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों यह कामना एक बार फिर से करना चाहेंगे। शुक्रिया। And before we close, a reminder of the headlines. Domestic stock indices climb around 0.9%. Sensex regains a 61,000 mark. Nifty settles near 18,200 points. Global stocks climb after U.S. Fed Chair Jerome Powell sounded less hawkish than expected in his testimony before the Congress. And Brent crude prices rise to trade above $84 per barrel level. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। सिंपल है छोटे, इन्वेस्टमेंट डांस की तरह है। अगर ध्यान से सोच समझ कर करोगे तो मस्त रहोगे, और अगर लापरवाही की बाजू वाले से भिड़ोगे। ओह, तो ये बात है। हाँ छोटे, इन्वेस्ट करने से पहले पूरी जानकारी जुटाइए और बाजू वाले की नहीं, अपनी अकल लगाइए। बड़े भैया, अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। Market Mantra brought to you by National Stock Exchange. Market Mantra.